اور حکمرانوں کو قانون کے تابع دیکھنا چاہتے ہیں. ہم جمہوریت کو اس ملک میں حقیقی معنی میں مضبوط، مستحکم اور طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں. We want to strengthen democracy. We want to strengthen democratic values. We want the true enforcement of participatory democracy so that every single human soul may get the true rights, true fruits of democracy in society. Why? If American people are enjoying the benefits of democracy, why Pakistan nation should be deprived of them? If UK and England, their nation, and every single man is enjoying the fruits of democracy in their society through their courts, through their law, through their parliament, through their system, through their society, why Pakistani society has been deprived of this benefit? If people of European Union, they are enjoying the democratic rights and human rights, why Pakistani nation should be deprived of them? This is a question of every human soul who is not allowed to sit in this parliament. More than 150 million people, the poor people, middle class, lower middle class, the people who are living the life of poverty, and the people living the life under poverty line. Although approximately more than 100 million people, they are crying. Their spirits are crying. Their souls are crying. Their eyes are crying. Their every single hair of their body and head is crying. And they are asking and demanding why the people of Pakistan have been deprived of the true benefits of humanity, true benefits of human rights, true benefits of law, true benefits of the Constitution, and true benefits of human democracy. Yeah, our case is very simple. We are here just for true participatory democracy. We are here just for devolution of power, so that the authority, financially, politically, judicially, administratively, the whole authority should go up to grassroots level. And every person should feel that I am part of this system of power. I am part of the benefits of this state. Our case is very simple. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ حکمران سمجھتے ہیں they think just only single day exercise, one day exercise of casting ballot paper, casting vote is more than enough in their democracy. Then people have no right to share the benefits of democracy in this country. They are living like animals, rather in a worse condition. ہم انقلاب مارچ در حقیقت اس حقیقی جمہوریت کو بحال کرنے کو ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ چھوڑ دو شہیدوں کو، زخمیوں کو. میں آپ کو ایک تجویز دیتا ہوں. نواز شریف صاحب اور ان کے جمہوری دوست جو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے تقریریں کرتے ہیں اور ہم یہاں پر آپ کو اہم خبر دیتے چلے. امیر جماعت اسلامی اور دوسری طرف بھی جناب قادری صاحب کی اسپیچ جس پہ انہوں نے ایک اور امینڈمنٹ کر دیں اور امینڈمنٹ یہ ہو if any ruler, prime minister, chief minister, their brothers, their family, their ministers or people in power, if they murder any person in the society, the law will not apply to them. They should go for this amendment. 21वीं तरमीम कर ले अगर हुक्मरान वजीर आजम, वजीर आला, वजीर और ताकतवर अगर
10-12-14 نہیں 100 قتل بھی کر ڈالے، اس پر قانون کا اطلاق نہیں ہوگا. آئین میں ترمیم کر کے یہ نکلے قانون کا اطلاق اور سزا اور ایف آئی آر صرف غریبوں کے خلاف کاٹی جائے. ایف آئی آر would be registered only against the weak, only against the poor, only against the neglected segments of this society. There will be no FIR to be registered against any powerful, strong person belonging to ruling class. ترمیم کر دیں تو پھر ہم کہیں کہ آئین میں فیصلہ کر دیں. کرو ترمیم، پورا میجورٹی ہے. کم سے کم اپنی تبدیل ترمیم کر کے آپ یہ تو کہہ سکے کہ آئین کے مطابق عمل ہو رہا ہے. آئین نے حکمرانوں کو قتل کرنے کی اجازت دے دی، مگر آئین کو کہتا ہے غریب ہو یا امیر، کمزور ہو یا طاقتور، چھوٹا ہو یا بڑا، قانون ہر ایک کے لیے برابر ہوگا. اگر آئین ایکویلٹی آف لا کہتا ہے then law should be equally applied on every single person of this society. Why this double standard? Why the law and constitution is different for the poor and different for the powerful and rich? We want to remove this dichotomy and contradiction from the system. میں آپ سے پوچھتا ہوں حکمرانوں، آپ کے بھی جماعت بیٹے اور بیٹیاں ہیں، آپ کے بھی بھائی بہن ہیں. اگر وہ قتل ہو جاتے اسی طرح جس طرح آپ نے 17 جون کا قتل عام کیا، تو بتاؤ تمہارے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ وہ شہید ہونے والے بھی تو کسی کے ماں، کسی کے باپ، کسی کے بھائی، کسی کے بہن، کسی کے بیٹے، کسی کی بیٹیاں. 2 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر گیا، سیشن جج نے حکم بھی دے دیا، مگر ایف آئی آر نہیں کرتے. اور ایک یہاں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، جو انہوں نے خود ایک جج مقرر کیا تھا، انکوائری ٹرائیبیونل بنایا تھا، نجفی صاحب ایک خود جج بنایا، ہم نے بائیکاٹ کیا، ہم اس میں نہیں گئے. پوری دنیا جانتی ہے، اس لیے کہ جب ہماری ایف آئی آر ہی نہیں کٹی، ہمارا کیس ہی انکوائری ٹرائیبیونل کے سامنے نہیں ہے، تو ملزم اور مجرموں کا پتہ کیا ہوگا. اور جج کو اتھارٹی بھی نہیں دی گئی کہ وہ دوسری ہماری ایف آئی آر درج کرنے کا آرڈر دے سکے. جب جج کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے اور ہماری ایف آئی آر بھی درج کرنے کا حکم دینے کی اجازت نہ دی، تو یہ تو یک طرفہ قصہ تھا، ہم نے بائیکاٹ کیا. لیکن عجیب بات ہے، بتانا چاہتا ہوں، اس انکوائری ٹرائیبیونل کے جج نے آج 13 دن ہو گئے، اس جج نے اپنی رپورٹ شہباز شریف صاحب کو دے دی اور نواز شریف صاحب کو دے دی. اب رپورٹ ان کے ہاتھ میں، یہ پبلک پراپرٹی تھی، یک طرفہ تھا سارا پروسیس. ہم شریک اور فریق بھی نہ تھے، ہماری گواہیاں بھی نہیں تھی، شہادتیں بھی نہیں تھی، ہم پیش بھی نہیں ہوئے، ہماری ایف آئی آر بھی نہیں تھی، سب یک طرفہ پروسیس. مگر وہ رپورٹ 13 دن ہو گئے، نواز شریف اور شہباز شریف اسے چھپنے نہیں دے رہے، اسے پبلک نہیں کیا جا رہا. اگر اس جج نے ان کو ذمہ دار نہ ٹھہرایا ہوتا تو یہ اگلے دن سارے ملک میں پوری رپورٹ کو چھپوا دیتے. لگتا ہے دال میں کچھ کالا ہے، لگتا ہے جو ان کے سر پہ ڈالا ہے. ان کا بنایا ہوا انکوائری ٹرائیبیونل یک طرفہ رپورٹ دیتا ہے، اس کو چھاپنے کی ضرورت نہیں، جس میں ہم شریک بھی نہ تھے. مجھے جواب دو، کیا یہ آئین ہے؟ کیا یہ کانسٹیٹیوشن؟ انکوائری ٹرائیبیونل اپوائنٹڈ بائی شہباز شریف and نواز شریف. He gave the inquiry report unilaterally. We were not part of that. We didn't join it.
because our FIR was registered. No witness from our side appeared before the court, the tribunal. In spite of this fact, that report was submitted to Shariks, both Shariks, 13 days ago, before, but it is not published. Why? आइन कहता है, the Constitution of Pakistan कहता है, this is a public document and every citizen should have access to every information where there is public interest involved. ये आइन का आर्टिकल है. हर शख्स जानना चाहता है कि बेशक हम शरीक नहीं हुए, यकतरफा इंक्वायरी है, मगर यकतरफा इंक्वायरी सही उसने लिखा क्या है, उसने किस पर जुर्म कत्ल का डाला है. हर शख्स जानना चाहता है. 13-14 दिन गुजर चुके, वो रिपोर्ट भी नहीं छापी गई, पब्लिक को नहीं बताया गया. आप इस निजाम को शर्म से डूब पड़ो. वजीरों, मुशीरों और इस पार्लियामेंट पे नाजायज कब्जा करने वाले लोगों और जमहूरियत के राह अलापने वालों, शर्म नहीं आती आपको? है कोई गैरतमंद जो पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़ा होकर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुतालबा करे कि तुम्हारी रिपोर्ट है यकतरफा, हम तो शामिल भी न थे, वो छापो, पार्लियामेंट को दो, पाकिस्तान के मीडिया को दो, कौम को बताओ. है किसी में जुर्रत कि ये मुतालबा कर सके? दिस इज आवर केस. देयर इज नो existence of constitution practically in Pakistan. There is no law in Pakistan. There is no democracy in Pakistan. There are no human rights in Pakistan. ये वो बेसिक केस है. और दूसरा मुकदमा अवाम का. 18 करोड़ अवाम जिनको 18 करोड़ अवाम जिनको खाना मुयस्सर नहीं, जिनको सुथरा पानी पीने का मुयस्सर नहीं, जिनके बच्चों को इलाज के लिए पैनाडोल, पैरासीटामोल की गोली दस्तियाब है. हॉस्पिटल में कहते हैं गोलियां, टीके, दवाई, सीरप अपनी लेकर आओ. ये करोड़ों अरबों रुपए के बजट जो हेल्थ के लिए मुकर्रर हैं और बाहर के मुल्क डोनेशन देते हैं, वो किस पर खर्च होते हैं? सरकारी अस्पतालों में गरीब को तो मिलता कुछ नहीं. ये कहा जाते हैं हम इस करप्शन को, वी वांट टू एलिमिनेट दिस करप्शन फ्रॉम द सेक्टर ऑफ ह्यूमन हेल्थ, फ्रॉम एजुकेशन, फ्रॉम ऑल सोशल सेक्टर्स. वी वांट ट्रांसपेरेंसी in every aspect of governance of Pakistan. We want transparency in institutions. We want transparency through depoliticizing the institutions of Pakistan. रियासत इदारे इनके सियासी नौकर बन गए हैं. अगर नादरा का चेयरमैन इनकी मर्जी के मुताबिक वोटों की गिनती का फैसला नहीं देता, इनके मंशा के खिलाफ देता है, रात के 2 बजे उसको बरतरफ करके घर में नोटिस दे देते हैं. सारी दुनिया में किसी एक मुल्क में, जमहूरी मुल्क में, बादशाहतों और शहंशाहतों के सिवा जमहूरी मुल्क में कोई एक मुल्क बता दे, सुबह 9 बजे तक भी इंतजार नहीं करते कि चलो कल दफ्तर तो आएगा ना तारिक मलिक, तो कल बरतरफ कर देना. रात को 2 बजे घर में सोए हुए को बरतरफ कर देना, उसकी वाइफ को, फैमिली को नोटिस दे. ये जमहूरियत है, ये जमहूरियत है. कैमरा के अफसर मर्जी के लगाना जो नहीं है, हालांकि उनकी जिम्मेदारी मीडिया को आजाद करना है, वो आजाद नहीं. स्टेट बैंक के गवर्नर ने इनकी गलत माशी पॉलिसी पे इनको रोका, नोट छापने पर उसको इस्तीफा दिलवा दिया. नैब का चेयरमैन जिसने एहतसाब करना है, वो 2 जमातें जिन पर लूट मार के केस है, जिनका एहतसाब होना है, वो दोनों जमातों के सरबरा मिलकर मुतय्यन करते हैं. चोर लुटेरे खुद मुतय्यन करते हैं नैब के चेयरमैन को. तो एहतसाब किसका होगा? गरीबों का होगा, इसका एहतसाब होगा, इसका एहतसाब होगा, इसका एहतसाब होगा, इसका एहतसाब होगा, इनका एहतसाब होगा, किसका होगा?
सिर्फ गरीब का, शरीफ का, ईमानदार का, बेकस का, मजबूर का, जो जितना लुटेरा ताकतवर है उसके गिरबान को छू कोई नहीं सकता। हम इस निजाम को खत्म करना चाहते हैं, अवाम को उनके हुकूक गिराना चाहते हैं और जुल्म और सितम और जबर और तशद्दुद सोसाइटी से खत्म करना चाहते हैं। हम औरतों को इस मुल्क के मर्दों के बराबर हुकूक गिराना चाहते हैं। हम डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेक्स को खत्म करना चाहते हैं। हम अक़लियतों को मुसलमानों की तरह नॉन मुस्लिम्स को बराबर तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक देना चाहते हैं। हम हर मसलक को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं। हम कमजोर और ताकतवर सबके लिए कानून को बराबर करना चाहते हैं। ये हमारा मुकदमा है और हम यहाँ बैठे हैं। जब तक नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ये सब हुकूमतें, सिर्फ नवाज शरीफ साहब नहीं, अगर वो अकेले मुस्ताफी हो तो उनके पास ऑलरेडी 2/3 अक्सरियत है। वो इस्तीफा देंगे तो परवेज रशीद साहब को वजीर आजम बना दें। वो इस्तीफा देगा तो ख्वाजा साद रफीक साहब को बना दें। वो इस्तीफा देंगे तो ख्वाजा आसिफ साहब को बना दें। तो इनके पास 100 लोग हैं, हुकूमत इन्हीं की रहेगी। मोहरे बदलते जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब अगर तनहा इस्तीफा दें तो क्या हुआ, राना सनाउल्लाह को वजीर आला बना दें, राना मशहूर को वजीर आला बना दें। उनके पास गालियां देने वाले और लोगों पर जुल्म करने वाले, बेहयाई करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं। लिहाजा ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इंडिविजुअल्स के इस्तीफा से बात नहीं होगी। हम इनकी हुकूमतों का इस्तीफा मांगते हैं, खात्मा मांगते हैं, ताकि नेशनल गवर्नमेंट बने, नेशनल गवर्नमेंट फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जो आकर सारी करप्शन का खात्मा करे, अकाउंटेबिलिटी करे, किसी जालिम और करप्ट को न छोड़े और जुडिशियल रिफॉर्म्स करे, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करे, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स करे, सोशल इकोनॉमिक माशी समाजी हालात की रिफॉर्म्स करे, इलेक्शन की रिफॉर्म्स करे, गरीबों को खुशहाली दे। 10 निकाती एजेंडा जो हमने दिया है वो नाफिज करे। गरीब को रोटी कपड़ा मकान दे, वो गरीब को तालीम, इलाज और रोजगार दे, गरीब का मेयार जिंदगी बुलंद करे ताकि वो आजादी से वोट देने के काबिल तो बने। ये एजेंडा नाफिज करे नेशनल गवर्नमेंट और तब नए इस्लाहात के निजाम के तहत इलेक्शन हो ताकि अच्छे लोग आर्टिकल 62-63 के मुताबिक इलेक्ट होकर आम में से भी लोग, औरतें, मर्द, तालीम याफ्ता, बाकिरदार, सफेद पोश, आला इल्म और हुनर वाले वो भी इलेक्ट होकर इस पार्लियामेंट में दाखिल हो सके। आपको तो पार्लियामेंट की जियारत के लिए पास भी कोई नहीं देता। ये तो चंद हजार लोगों के लिए सारे इदारे हैं। ये वो केस है अच्छी तरह मुज़ाकरात के लिए आने वाले और नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब वो अच्छी तरह सुन लें, समझ लें। ये केस है जो मैंने आपके सामने रख दिया और इंशाअल्लाह ताला ये लाखों लोग, ये मजलूम, ये मजबूर, ये महरूम, ये बेबस, ये बेकस, ये मकहूर अपना हक मांगने के लिए आए हुए यहां से नहीं जाएंगे। आप ये भूख से मार भी देंगे, इनके हमारे जनाजे भी नहीं पड़े जाएंगे। निजाम बदलेगा।